Yes, Prithvi, we are live. Okay. So, hi, good evening, everyone. I hope you're doing great. And we just ended one session on Pinkish Foundation platform. And believe us, the entire day was a bit hectic and enjoyable and kept us busy because there were a number of programs running since morning on Father's Day. Now, how come suddenly this Father's Day has become so much of a gaga, so much of a celebration? Because I remember when I was a kid, there was no Father's Day, there was no Mother's Day celebrated specifically in the families. The most of the celebrations were exactly either only birthdays or the anniversaries of the parents. I feel I have a reason to quote here. I feel the Mother's Day and the Father's Day have started getting a lot of attention in specific terms of celebration because nowadays parents have become more aware. I hope you all will agree with me. And this awareness doesn't only mean which university to take your admissions in, or which is the best school to go and make your kid get admission into, or which is the best society to be a part of, or which is the best club to be joined, as parents or as kids. But it is all about awareness on how your kids are connecting with you, bonding with you, and how can you make that bond even stronger, that there is no hush hush in the family. So all of us, those who have been associated to Pinkish Foundation, they will know what hush hush I'm talking about here. And today's program, dear ladies and gentlemen, all the boys and girls, those who are watching us in this program, first of all, a warm and heartfelt welcome to you all for our online Father's Day celebration. And in the morning, the message that I sent, that is specifically mentioned, distances may keep us apart, but technology has got us together. Yeah. And this is why there is a reason, there is a cause that we are celebrating this Father's Day online. Today's celebration is not just to honor the fathers or appreciate the incredible fathers and the things they have been doing in life or the achievements they have taken in life. It is all about embracing the important and often overlooked aspect of childhood, specifically towards their daughters, which is about supporting their daughters during first periods or throughout their period journey. This Father's Day, we have chosen a unique theme: celebrate periods. We believe it is vital to recognize how a daughter grows, how her body, her mindset shapes into a woman of tomorrow. And yesterday only I was watching an interview by Mrs. Sudhamurthy, and she specifically said it is always a father who leaves a lifetime impression on her daughter, and this is what decides how a daughter is going to behave tomorrow, how is a daughter going to be established tomorrow, how a daughter is going to be known in the fraternity tomorrow. And probably today I'm sitting here because I have always been supported with such kind of a dad. you know there have been generations, and every generation had a different struggle. And believe me, to start with this program, I had invited three fathers from baby boomers generation. People born in 90s, 40s till 1960s, and one of the participant was my father as well. But due to some emergency at the last moment, they all three had to back out. I cannot cite the reasons here, but they were very strong for me to believe that they shouldn't be here on this platform because their focus was needed somewhere else. Their care, their attention was needed somewhere else, because I know their blessings and their support has always been there with me. So just to start with the line, जब एक बेटी से पूछा गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा का मतलब क्या है, and you ask any daughter in this world, the only answer will come, मेरे पापा मेरी दुनिया हैं. My dad means the world to me. Isn't it? आज का उत्सव फादर्स डे है, बट आज का विषय है बेटियों का मासिक धर्म. और पिता की महत्वपूर्णता हम सब जानते हैं. हम सब जानते हैं पिता का एक
परिवार बनाने में उनका क्या एक उद्देश्य होता है, उनकी क्या एक भूमिका होती है, और पिता हमारे परिवार का कितना प्रतिष्ठित हिस्सा होते हैं। आज का विषय हमारे इस समारोह को न सिर्फ विशेष बनाने के उद्देश्य से रखा गया है, बल्कि इस समारोह के साथ हम लोगों तक ये भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब समय आ गया है रूढ़िवादी प्रथाओं को तोड़ने का। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का और सबको संयोजित होकर चलने का। और इसके चलते हम आज पिंकिश फाउंडेशन पर बस एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमसे आज जुड़े हैं, इन सभी का मासिक धर्म के प्रति नजरिया बदला जाए। आप सभी ऑडियंस का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब यहाँ पे हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी हम में से काफी लोगों के दिल में वो संकोच होता है कि हम इस बारे में बात कैसे करें, हम इस बारे में आगे बात करें तो कैसे बढ़ें। तो मैं इस बात पर सिर्फ एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगी कि आज हम फादर्स डे पे एक बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और जहां बात एक बेटी की हो रही है, उससे जुड़ा हर एक नेचुरल प्रोसेस उसका बेटित्व है। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम पे बहुत सारे डैड्स जुड़े हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन तो फादर्स डे ही का है। तो जहां हम बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, उसको सक्षम बनाते हैं, उसको आत्मविश्वास देते हैं कि वो 4 लोगों के सामने खड़ी होकर बात कर सके, तो क्या मासिक धर्म को वो तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि यही जीवन का प्रारूप है, ये जीवन देने की क्षमता है, ये आप और मैं हम सभी जानते हैं। आज मैं बुलाना चाहूंगी उन सभी फादर्स को जो आज के समय के हैं, जिनकी बेटियां शायद 1, 2, 6, 8, 12 इस साल की उम्र की हैं, और ये आज की जनरेशन, मतलब न्यू जनरेशन ऑफ फादर्स जिनको कहा जाता है, ये अपनी भूमिका आजकल परिवारों में बदल रहे हैं। कि भूमिका बदलने से मतलब इनका जो रोल रीडिफाइन हो रहा है, क्योंकि आज तक पापा को ये समझा जाता था कि बाहर करते हैं फादर्स की, उनका रोल अब सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रह गया है कि घर में काफी चीजों के लिए लग्जरी जुटाएंगे। फादर्स अब वो भी रह गए हैं, बिकॉज all the fathers I have today here, they are the one who broke the taboo of menstruation. Believe me, when I called them to invite for this program, they were very open to this topic. They wholeheartedly accepted my invitation. And first of all, now I would like to invite my mentor, my guide, my senior, and a friend, Mr. Arun Gupta, on the platform. He is the founder of Pinkish, and all the talks I'm doing here today, all the inspiration I have gathered to celebrate last year my daughter's first periods comes from here. So I welcome you, Arun sir, and I thank you from the bottom of my heart for being that guiding light for me. You're on mute, sir. Thank you, Ruchi, for that warm welcome, and a very good evening to you, and a great good evening to all your audience. And wonderful to be here. Let's go with the program. Yes. So to start with something, whenever I think about doing any program, creating about any awareness, doing about any menstrual hygiene camp, I always have a person to look up to is Mr. Arun. Mr. Arun Yadav, who is the founder, who is the super dad amongst here today. And sir,
Quickly, I would like you to share your story of how Pinkish started. What was the seed that Pinkish was shown? And believe me, I'm asking you this story because this is the strongest case and example I can give to my audience today what a father daughter relationship means. What is that understanding that you have shown to bring this platform like Pinkish and we are all a part of? Yes, sir. So, Ruchi, this is a 6 years old story, 2017, early 2017. My elder daughter, Khyati, who was 16 years at that point in time, so she came to me one day and she came to me with the fact that she noticed that a young girl who came to our home, and she was our housemate's daughter. She had a blood stain on her dress, and when Kathy inquired, she found out that the poor girl was not wearing a sanitary pad. More so, she did not even know what a sanitary pad was. And this alarmed Kathy, disturbed her. She did some research, and she kind of started discussing with me. And she's very open with me. In our family, everybody is very open, and even in terms of periods, my girls talk to me, both my daughters. And that is the time she said we need to do something about it. And she asked for my help. Initially, I honestly, for some time, I could not understand what to do, right? But eventually, not taking a lot of time, somewhere because my daughter wanted it, and I realized this is a large problem in India. 60-70% of girls get impacted by period poverty, right? They do not use sanitary pads. And there's a responsibility to kind of change this, because until unless we since last 20, 30, 35 years, we're having a gender uh, uh, equality struggle that is going on, right? uh, can I take a moment? Just a second. So we had a very enthusiastic dog, right? Yeah. And this whole struggle of gender parity cannot be reached until unless a very simple process like menstruation can be normalized. And we started Pinkish Foundation from there. And since there we have come a long way. We have so far supported, directly supported, more than 5 lakh girls, distributed more than 50 lakh sanitary pads across India, and we work in around 25 states and UTs across India. And the whole genesis of this was somewhere when my daughter came to me to help her start work on this. And that's the father daughter love that I couldn't refuse. And we started Pinkish. So, this is called an incredible journey, an incredible seed that was sown 6 years ago. And this is how a father, just on a basic request from his daughter, who did not felt any hush hush around this topic, and have altogether built an organization called Pinkish Foundation. And we do not have a count of how many women we have associated with us together. We don't have a count on how many women we have served with in terms of the menstrual hygiene and awareness camps. We don't want to even mention that here, because the ultimate agenda, ultimate theme of program today is we still have women dying out of cervical cancer. We still have number of women in rural areas using mud or cow dung during their period journey. Why am I discussing this all? Is the basic reason because this is not discussed open in the family. Had it been a discussion open in the family, probably number of women could have been saved, those who have died due to severe infections that turned into myelomas, cervical cancers. So now I feel the time has come, the new generation, the millennials generation, and the next generations to come. This hush hush will not only ease the life of a woman in every aspect of life, but it will also save them
turning their life measurable at number of points. Whenever the discussions happen in the families from tender age, from the age your daughters are getting periods on time, it will solve a number of problems that girls get on the later stages of their lives. The basic example can be PCOD. So just to before I invite all my fathers, I cannot forget to talk about fathers, and I have come with the small shortest poem possible in Hindi for all the dear fathers here on the platform. मैं हूं क्योंकि तुम हो पापा, मैं हूं क्योंकि तुम हो पापा, मेरा पहला झूला, मेरा पहला प्रेम तुम पापा, जहां माँ ने बिछाया था आंचल, जहां माँ ने बिछाया था आंचल, फूलों से सजाया तुमने पापा, जहां माँ ने सिखाए संस्कार, दुनिया की सुलझन थे तुम पापा। और अब जब दहलीज है आन पड़ी, और अब जब दहलीज है आन पड़ी, क्या तुम ना संभालोगे पापा? So now, on the contrary, I welcome all the fathers here, those who are representing the new age of fathers, those who bring fresh ideas, innovative approaches to talk to their kids, and a deep commitment to being actively involved in the life of their kids. So, firstly, I would like to welcome Mr. Gautam Pant, a loving husband, and we both are parents to two lovely daughters. I would like to welcome Mr. Neeraj Pant. I would like to welcome Mr. Deep Pandey, Mr. Samrat Hore, Mr. Vasu Arya, and I think it's a good time to start with the discussion on how, as fathers, those who all are sitting here, you have broken this taboo of menstruation by celebrating every moment in your daughter's life. Be it was her first birthday, be it the first time she walked, on her own, be it that her first cycle ride, be every time you took her for the vaccinations. There are a number of occasions where you have been there with your daughter for giving that feel of ease, giving that feel of strength. Yeah. So, first of all, if I want to start this session, I want to ask all the fathers here, how do you feel these generation this generation has changed from the past generation wherein our fathers were there? How do you all feel? What specifically has changed when we talk about the current generation of fathers with respect to their orientation, their bonding, their connectedness towards their daughters? I would like to start with Mr. Neeraj. Thank you, Ruchi. Am I audible? Yes, yes. Yes. What I feel like is that earlier the parents were doing things based on the belief which comes from religion or the community they come to. But this time, if I take my example, I think that education has enhanced my knowledge, and now I can take very easily a decision what is right for me or for my daughter, or what is not right for me or for my daughter. So I think because of the education and these days the awareness that we have and the way we are open to people, a mindset is changing, and then I'm hoping that it will change for everyone. Okay, okay. I very well appreciate this thought, and probably we have all recognized that there was a need for overcoming all the old beliefs, and there was a need to understand the logic behind, and to serve our kids with more specific and scientific approach, and which is all about taking care of their emotional well-being first, and everything comes later. So, in this continuation, I would like to ask Mr. Samrat, what is your view on this? See, I mean, this taboo has to get broken anytime sooner now. I mean, since I am from a Bengali background, I've seen this being celebrated as Kumari Puja in many parts of Bengal.
But then also that generation was not very open about, I mean, especially the dads were not very open about these things. Me being a single child, was never into these things with my mother. I've never discussed this thing. But after that, I got married. After that, the complications of menstrual cycles that I've seen, after the complications that my wife has happened with, I've thought that it is not a taboo subject to be thinking on. I mean, we need to get our support done to the masses there in the market, and to our families also, and we need to teach people about this. Great, great, great. So I would now like to come to Vasu, and before that, I must say that Samrat mentioned that it happens in their tradition. In their tradition, in their Bengali tradition, this occasion is celebrated by the name of Kumari Puja. So I must thank you, Samrat Dada, for bringing that context, that it is celebrated in number of families, doesn't matter what hype it has got. So I would like to now come to Vasu here and asking, I know you have a sister, and just to give me a picture or context about how open it was in your family, because you're both the parents are a doctor. Yeah. So was it an open discussion in the family? What is your view on this? देखिए, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पुराने बैकग्राउंड के हैं, थोड़ा ओल्ड एज जैसे वो है, तो कभी ओपन डिस्कशंस इस बारे में हुए नहीं। ठीक है, अभी भी नहीं हुए हैं स्टार्ट इतने। दे बीइंग डॉक्टर्स, बट दे बिलोंग टू अ जनरेशन जहाँ पे ये सब इतना ओपन नहीं था। लेकिन अभी लेटेस्टली क्या हो रहा है, पहले क्या था, फीमेल का या मदर का एक रोल था और फादर का एक रोल था कि भाई ये सारे जो काम हैं ये मदर्स करेंगी, ये सारे जो है फादर्स करेंगी। तो कभी फादर को कभी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं अपनी डॉटर से किसी भी तरह के इस टॉपिक पे बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। बस इतना पता होता था कि एक ब्लैक पॉलिथीन रखा है, उसमें ये पड़ा है, बट फादर्स, ब्रदर्स या कोई भी मेल इन द फैमिली कभी उसको टच नहीं करते थे, ना ही उसको कभी किसी को देते थे इस्तेमाल के लिए, कह लीजिए। पता होता था क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी फैमिलीज में तो नहीं, नॉट इन पंजाबीज और मे बी सम अदर, बट कुछ अभी जो जैसे मारवाड़ी फैमिलीज हैं उनमें तो लेडी किचन वगैरह में और इन सब में नहीं जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेंट्स को पता नहीं होता है, बट शुरू से वो देखते आए हैं कि एक रोल डिवीजन है कि ये काम है ये बस मदर ही करेगी, या बड़ी बहन है, अगर 2-3 बहनें हैं घर में तो वही करेंगी। पर धीरे धीरे अब ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं। अब हर कोई वर्किंग है, लेडीज भी वर्किंग है, जेंट्स भी वर्किंग है, तो अब वो रहा नहीं है। जेंट्स अब किचन में भी जाते हैं, जेंट्स पूरा हाथ बटाते हैं, तो एक टीम की तरह काम करना पड़ता है, करना चाहिए भी। एब्सोल्युटली वासु, और आपके इस बात को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स केयरिंग नहीं थे या फादर्स केयरिंग नहीं थे। उनको पता था कि घर में अगर बेटियां हैं, घर में अगर विमेन हैं, तो ये सब चीजें एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रोबेबली डिस्कशन को मुद्दा नहीं बनाया गया, बट केयर पूरा थी। तो मैं एक छोटा सा मुझे एक वाकया याद आया। जब मैं छोटी थी और मैं कॉलेज से हॉस्टल में पढ़ती थी, तो मैं जब भी घर आना होता था, तो कई बार इनिशियली जब मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, पीरियड स्टार्ट हुए, तो माय पीरियड फ्लो वाज वेरी हैवी। और सुबह उठने के बाद, लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड, आई गॉट अप फ्रॉम द बेड एंड आई वेंट फॉर माय नॉर्मल रूटीन। एंड वंस आई रियलाइज्ड, आई केम बैक इन माय रूम, आई रियलाइज्ड कि मेरे फादर जो है मेरा गद्दा ठीक कर रहे हैं, नई चादर बिछा रहे हैं और गद्दे को छत पे डाला गया है। और उसके बाद मेरी माताजी मुझे कमरे में दूसरे खींच के ले जाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें ध्यान नहीं रहता है। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? तो शी सेड कि गद्दे पर स्पॉट था और पापा साफ कर रहे हैं। तो इतने में मेरे पापा आए और उन्होंने बोला कोई तो करेगा, किसी को तो सफाई करनी है, अब वो करे, तुम करे, मैं करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो दिन था, आज का दिन है, जिसने मेरे दिमाग में हमेशा एक मार्क बनाया, आप करें मैं करूं, किसी ना किसी को तो पहला स्टेप उठाना ही है। और शायद हम आज इसीलिए यहाँ पे गैदर हुए हैं। हम सब वो फादर्स, हम सब वो पेरेंट्स हैं जो शायद वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जो सेलिब्रेट करेंगे अपनी बेटियों के पीरियड्स को। अब मैं I would सर like की to तरफ add बढ़ती something हूँ। on this. Yes, Aaj, please, please. since we had this session, I had spoken to my dad that my dad is 78 years old. Everybody in the session know apart from a few people now. So I told my dad कि पापा एक सेशन में बैठना है, so for half an hour or maybe 1 hour, don't call me for anything. I'll provide you all the things.
किस लिए बैठ रहा? पापा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर एक डिस्कशन है, वो जरूरी है अब करना, और वो समझाना चाह रहा हूँ, तो इस पे आप लोग बात करोगे? मैंने कहा हाँ पापा, ये हम लोग बात करेंगे, सिंस आप लोग जानते, ही सपोर्टेड कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, अगर ये कर रहे हो तो, अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो 70 ईयर्स ओल्ड धीरे धीरे अपना वो भी चेंज होगा आप धीरे धीरे। वो उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि क्या था, पहले ऐसी कंडीशनिंग ही नहीं थी। जैसे हमारे फादर्स हैं या हम हैं, हमारी ऐसी कंडीशनिंग ही नहीं है कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से बात करनी है। तो शायद ऐसे सेशंस में पार्टिसिपेट करके, ऐसे सेशंस का हिस्सा बन के हम आगे अपने बच्चों को बहुत आराम से कंडीशन कर पाएंगे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए। Absolutely, absolutely. And probably this is where the phenomena of healing comes, you know. Maybe our fathers or great grandfathers had that, you know, dilemma or guilt somewhere कि भाई हम भी अपनी बेटियों का ध्यान रख सकते हैं, और शायद हमारी जनरेशन के फादर्स वो हीलिंग लेकर के आ रहे हैं, और इसीलिए सम्राट के फादर ने उनको सपोर्ट किया, बिकॉज ही बिलीव्ड कि हमारे समय पे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब जनरेशन बदल रही है तो अब इसके बारे में बात होनी चाहिए। अब मैं दीप सर के पास आना चाहूंगी और उनसे मेरा ये सवाल होगा कि आपको कैसे लगता है कि फादर्स अपनी डॉटर्स की मेंस्ट्रुएशन जर्नी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, या क्या ऐसा बिहेवियर हम अपना मॉडरेट कर सकते हैं कि हम अपनी बेटी की पीरियड जर्नी में उसके साथ रहें? दीप सर। Thank you, Ruchi. Thank you for roping me in. And I also like to congratulate the Pinkish Foundation for raising this cause, because it is very important that some of this awareness has to be created somewhere. So they have taken one step, which is very good. So as a father, the role we can play a very crucial role, and it is because menstruation brings in a range of emotion among girls, and it is very it is very important for fathers to be very concerned about it. They have to be understanding and also empathetic about the fact, and also support in any concerns which the daughter might have. So now what happens is, how they can do it or how they can emotionally support the girl is, they have to listen first, listen very carefully. What are their concerns? Answers they can give to any questions which might arise, which they raise, or any concern which their daughter might face. So it is very important that all these things are addressed and actively they are involved in this process, and don't shy away from anything in the form that this is not my responsibility. As everyone in this forum has actually said that now it is not something, it is a responsibility of one particular individual, but everyone in the family need to contribute toward it. So that is what I believe, and I think it's a big role which now fathers have also to play. Absolutely, absolutely. So Neeraj sir, your views on this? How do you feel fathers can actively support their daughters, specifically during menstruation journey? Well, I feel that establishing a supportive dialogue can normalize the topic. I mean, just have a conversation with the kid, and that will actually help fostering a trusting relationship. Again, I feel that when we do the open conversation and when we just touch the space, like how the body changes, how the feelings are during that time, that can give a confidence to the kid also that yes, I have mom as well as I have dad to support. So if you do some open conversation on this topic, that will be a good start for a father to support the kid. That's how I see. Absolutely, Vasu. So, as Vasu said, घर पे चीजें होती थी, black polythene होता था, but पता था क्या हो रहा है, but उन पर ध्यान नहीं ज्यादा दिया जाता था या उनको bypass करते थे. तो what are your views on this, Vasu? How are you changing as a father? अभी मेरी बेटी 1.25 साल की है, बट जैसे जैसे वो बड़ी होगी, जब उसको इस तरह की कोई ज़रूरत होगी, तो मैं इंश्योर करूँगा कि वो मतलब अपनी मदर को ना देख के मेरे पास भी आ सकती है हेल्प के लिए। इस तरीके का एनवायरनमेंट मैं कोशिश करूँगा, जब वो इन चीज़ों को समझने लगे तब से ही बनाऊँ। और घर पे जो भी मतलब
इस दौरान जो भी चीजें चाहिए होती हैं, कुछ पैड्स हैं, टेम्पॉन्स हैं, जो भी चाहिए होता है वो आराम से उसको अवेलेबल हो, रेडिली अवेलेबल हो, कहीं छुपा के ना रखना पड़े। कोई छुपाने वाली चीज नहीं है ये, Great, ठीक है। great. अगर हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मतलब वी मस्ट ओपनली अनाउंस इट। तो ये वाले Absolutely. मैं इंश्योर करूंगा इस चीज को। Absolutely, absolutely. Right. And to add on here, now that my elder daughter has got her periods last year, so every month, whenever her time comes, it's Gotham who packs her pouch. He will ensure that there is a spray in her bag, the toilet seat spray. There are pads in her bag. There is a different poly bag in her bag. There is a extra panty in her bag. So this is how I think the role of a father is shaping. What is your view on this, Samrat Dada? How are you changing as a father? Told now, and since I have seen Gotham do it, I've seen you do it. We get inspired from you guys regarding this. But see, the things, as rightly Vasu said, these things has to be done. The general awareness has to be done. Basically, when we speak to our daughter about this, when the time comes, and support her, educate her regarding this, these things and few pointers has to be done in the few this thing, because we are doing it on our home, but outside also we need to educate people now, which is most necessary, because Absolutely. we know what to do. But since Absolutely. people are there who still gets back, on the contrary, we need to educate people also now, be it Yeah. rural, be it urban. पढ़े लिखे लोग तक इस चीज में हिचकिचाते हैं, तो वो चीज Absolutely. Absolutely. और जब हम ये प्रोग्राम की एक बेस बना रहे थे, एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर रहे थे, मैं अरुण सर से मिली, तो अरुण सर का एक डायलॉग मुझे बहुत प्रभावित कर गया, जब सर ने ये बोला कि माँ तो करती है हर चीज, माँ तो है ही सब कुछ करने के लिए, पर जब उसमें फादर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एक सेलिब्रेशन बन जाता है. This is what the meaning of a true celebration is. And I know Gautam is there to support us always. So Gautam, would you like to share something here? You want to speak something on this? What are your views on this? How do you feel now that our younger daughter is also getting ready? So what are your views on this? Hello everyone. Hope you can hear me. Yes. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा. I think it's all about father-daughter bonding. अरुण सर भी आ गए. It's all about father-daughter bonding and how open we are, how we are making them comfortable about the basic issues. Like day-to-day issues में भी अगर हम उनके साथ रहेंगे तो these issues also can be resolved. It's all about बच्चे कितना open करते हैं हमसे चीज़ें, वो हमसे छुपाए ना ये सब चीज़ें. Or it's more of like a bonding. And we'll prepare her, definitely we'll prepare her Anna also, Anna, my younger daughter, for this. Yeah. And she knows कभी कि दीदी को क्या हो रहा है, दीदी को क्या नहीं हो रहा. She also knows about all these things now. So she'll be also coming up with the things, and and she'll be sharing definitely. Absolutely. So it's all about father-daughter relationship we are talking about here, and all the fathers have told us how unique their relationship with their daughter is. So now I would request all my audience who are watching this program to please adapt these suggestions. These are coming from those fathers, those who are there with us in this fight, which is all about making the environment open for our daughters. The only key is to show love, understanding, and active support throughout the journey of her menstruation period. So, my next question to you all is, to all the fathers, it's an open question to all the fathers, that can you think of some, effective ways wherein you can initiate open conversations with your daughters? Because believe me, once a daughter is about to have her periods, her body starts preparing it 2 years before. It's a 2 years journey when a daughter actually gets her periods. There are body changes, there are mental simulations, there is a lot that a daughter goes through. So आप सभी पिताजी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोगों को कैसे लगता है, कैसे आप लोगों को लगता है कि आप वो ओपन कॉन्वर्जेशन शुरू कर सकते हैं अपनी बेटियों के साथ पीरियड्स जैसे टॉपिक को लेकर. So Arun sir, you can quickly give some hint on this. How did you start it with Khyati?
ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था? Why what to think about it? I think the important thing is, first of all, fathers को भी एक बार को ये श्योर करना पड़ेगा कि उनकी नॉलेज कितनी है, ठीक है? Absolutely. कॉन्ट्ररी टू सेल्फ बिलीफ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत पड़े, क्योंकि जो हम जनरेशन है, हमारे टाइम पे हमें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी। हमने अपने दोस्तों से ही सीखा था, और काफी लोग ऐसे होंगे जिनको शायद शादी के बाद, एटलीस्ट मुझे तो शादी के बाद सही से समझ में आया था व्हाट आर पीरियड, उससे पहले आइडिया ही नहीं था, राइट? तो गौतम इज ऑल्सो रेजिंग हैंड्स, थैंक यू गौतम, राइट? और तो इसलिए जब उससे पहले ब्रशअप किया, और जब बात करने का टाइम आया तो ऐसे बात करी जैसे कोई नॉर्मल बात है, राइट? उसमें कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। और यही मैं कहूंगा कि जस्ट टॉक, राइट? Absolutely. I agree with you, Arun sir. Probably that is why our behaviors were such, no? क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं वो बातों में बिलीव हो जाता था कि ये खुल के बात करने वाली बात नहीं है, इस बारे में पापा से जाके बात नहीं करनी है, इस बारे में ओपनली बात नहीं करनी है। जब आप पीरियड्स पे हो तो आप संभल के बैठो, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दिया गया था कि कहीं ना कहीं वो एक कंडीशनिंग हो गई थी कि थोड़ा सोच समझ के बात करनी है, एंड दैट इफेक्ट came more on the boys fraternity, those who are the fathers of today. So what is your view on this, Neeraj? How can you make it open for your daughter at home to come and discuss anything she wants with you, not specifically periods but anything? Well, we all know that magic cannot happen overnight. कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। जब से मैं आपसे इस इवेंट की हमारी बातचीत हुई है, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, मैं आई वाज ट्रैवलिंग आउटसाइड और मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट वे आई विल चूज। सो ऑन पीरियड्स देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स कम्स इन, उनकी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट होती है। मैं जब ट्रैवल करता हूँ, आई मेक श्योर दैट माय डॉटर आराध्या, शी इज वाचिंग ऑल द होर्डिंग्स एंड शी इज अंडरस्टैंडिंग। So maybe on day-to-day basis, whatever is more connected towards you want to make your kid learn, start, talk on it, rather than hide. Like today when she see a car, she says, Papa, this is, I think we have this car. Why? Because she has seen this. We have discussed about that car. Same way, this is one of the area which I think हमें day-to-day basis पे उनको connect करके उन्हें बताना चाहिए। This way, I think एक space हमारे बीच में बनेगा जिससे हम conversation build कर पाएंगे, trust बनेगा, and I think these are the ways I see कि day to day के अंदर आप चीजों को reference करो और अपने बच्चे को educate करो। That's how I see. Absolutely. बच्चों को हम स्कूल में डालते हैं, उनकी एजुकेशन ही शुरू होती है show and tell activity. Yeah, so this is one of the great example, I must say, Neeraj. Vasu, what is your view on this? जैसा नीरज ने कहा कि इसको डिस्कस करना चाहिए, इसको डिस्कस करने के लिए फॉर्मली भी डिस्कस कर सकते हैं, पुराने टाइम से कुछ एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं कि जैसे पहले बेटा ऐसे होता था, लोग मतलब कपड़ा लगाते थे, उससे बीमारियां हो जाती थी, और जैसे जैसे मतलब ज़माना बदल रहा है, आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। मतलब एक स्टोरी बिल्डिंग की फॉर्म में भी हम उनको, बच्चों को इन्वॉल्व करके, ताकि वो जाने भी ये एक प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई टैबू नहीं है, ये सभी मतलब फीमेल्स का एक नेचुरल प्रोसेस है, एक ये क्लींजिंग प्रोसेस है उनके लिए। इस तरीके से मतलब उनको हम गाइड करें, इन्वॉल्व करके कम्युनिकेटिव वे में, स्टोरी टेलिंग फॉर्म में, जैसे भी जिसको कन्वीनियंट है, लेकिन उनको बताया जाए कि ये एक उनके लिए प्राउड की बात है, प्राइड की बात है, डिग्निटी की बात है। इसमें कोई शर्माने वाली, झेपने वाली, घबराने वाली, सर झुकाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। Absolutely. तो इस तरीके से मतलब चूज कर सकते हैं बताना, और एक राइट मोमेंट पे। बिल्कुल ये नहीं कि जब आपका मन कर रहा है आप तब बताएंगे। पहले आप एक दो बार बच्चे को अपने साथ बिठाइए, उसके सर पे हाथ फेरिए कि बेटा क्या चल रहा है। अगर लग रहा है कि उतनी सॉफ्टनेस आ गई है डिस्कशन में, तो फिर उस टॉपिक पे करिए। जंप नहीं करना है, शूट नहीं करना है, आराम से टाइम लेके उस चीज के लिए। Absolutely. सम्राट, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? How do you feel we can go ahead with this and do this for our daughters? I think his connection
Deepu Bhaiya, why don't you say something about it? What are your views on it? How can we open this conversation at home for our daughters? I'm audible now. Yes, yes, yes. Okay, okay. So what I feel is what we can do. We can also ask our better half or our wife. I can ask her to initiate the conversation. So she can at least initiate the conversation, and you can join in. That can be a good idea. Absolutely. If you don't want to initiate it, or you don't know how to initiate it, you take the help of your wife. They, because they have been discussing it and they have a bonding which is there. Now utilize that bonding, and you also join in. You can discuss with her earlier that when we are together, you can start initiating the dialogue, and then maybe you can join in and also share some or the other instances which you may know, or how she is coping up with it and how she plans to overcome this, or things like that will obviously help, is what I believe. Absolutely, absolutely. This reminds me of my story when I spoke to Arika about this. And Gautam, why don't you speak on this? What are you feel are the effective ways we can communicate with our daughters now that we have done it for Arika? So I want you to speak so that our audience knows what is the best way possible. See, I simply say it's all about father-daughter bonding. We should be open. We should be, in discussion for each and every aspect of our life. राइट फ्रॉम द मैं सिर्फ होमवर्क कराना एक डैडी का एक फर्ज नहीं होता, सिर्फ कि बच्चों को शाम को आके होमवर्क कराना. लाइक वी शुड भी क्या हुआ स्कूल में, क्या नहीं हुआ, व्हाट आर द प्लस, व्हाट आर द माइनस, कौन फ्रेंड्स हैं, कैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड इनके साथ नॉटी भी बनना, तभी बच्चे थोड़े ओपन अप होते हैं. वंस दे गेट ओपन अप, देन दे विल स्टार्ट शेयरिंग यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स. आज पापा ये Absolutely. हुआ, आज पापा ये हुआ. तो एक बार ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक है, इट्स टॉपिक ऑफ वेरी गुड डिस्कशन. तो वंस एक बार बच्चे आपसे खुलेंगे, तभी ही आपको वो छोटी छोटी चीज बताएंगे, पापा आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ. तो आई Absolutely. स्टिल से वी हैव टू बी. हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, लाइक फादर एंड लाइक किड्स हैव ए डिस्टेंस कि यार ये पापा से नहीं बोलना, पापा ऑफिस से आएंगे तो गुस्सा करेंगे. तो वी मतलब वो बेसिक चीजें तो हम बताते नहीं थे कभी. आई फील सबके साथ ही ये हुआ होगा कि भाई पूरे दिन का क्या समरी लेके मम्मी बोलते थे कि यार अगर पापा आएंगे तो मैं पूरी शिकायत करूंगी और फिर पिटाई होगी. आज की डेट में लाइक फादर्स आर मोर एक्सेसिबल, राइट. तो पापा को हर चीज की छोटी छोटी चीजों का पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो इट्स ऑल अबाउट अगेन बॉन्डिंग. और जितना हम ओपन रहेंगे बच्चों से, उतना ही बच्चे हमसे ओपन रहेंगे. और इट्स Yes. नॉट अबाउट नाउ, इट्स नॉट अबाउट नाउ ओनली पीरियड, इट्स अबाउट दे आर गेटिंग इनटू टीनेजर्स. उसके बाद बच्चे बड़े होंगे, दे आर गेटिंग अबाउट दे आर गुड कॉलेज फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. तो दे स्टार्ट शेयरिंग एवरीथिंग. आई बिलीव Absolutely. अरुण सर इस बात से सहमत होंगे कि मैं ख्याति की बिल्कुल भी एज आ गई होगी, बिकॉज दिस शी विल स्टार्ट शेयरिंग हर कॉलेज डेज, और क्या क्या हो रहा है कॉलेज में, क्या क्या नहीं हो रहा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. मतलब जी फुल्ली एग्री एंड रादर मैं ना इसको रिवर्स जाऊंगा. एक्चुअली है क्या कि पीरियड कॉन्वर्सेशन इज नॉट द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वी आर गोना हैव विद आवर डॉटर्स. ये या पहले गुड टच बैड टच की भी बातें करेंगे जब वो एग्जैक्टली. 4-5 साल की छोटी बच्ची है. और वहीं से एक फादर का इन्वॉल्वमेंट जो है ज्यादा जरूरी है. जैसा वासु भाई ने भी बड़ी कैटेगरी वो कहा था, अचानक नहीं शुरू कर सकते. तो एग्जैक्टली. इम्पोर्टेंट ये है कि फादर्स अपना एक ग्रेजुअली रोल ग्रेजुअली. या ग्रेजुअली और हमेशा स्टार्टिंग से निभाते हुए चले. और थोड़ा सा राइट. रुचि आपकी परमिशन से मैं साइड ट्रैक करूंगा क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए. देखिए हम आज फादर्स डे है, बेटियों की बात बहुत हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट जो है पीरियड्स है, राइट. लेकिन इस पूरे कॉन्वर्सेशन में बेटों को नहीं भूलना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बेटों को भी Absolutely. हम बात करते हुए चले. देखिए जब Absolutely. मैं छोटा था तो मुझे याद है इट वाज 89 और 90 टीवी पे एड्स आने शुरू हुए थे, स्टे फ्री एंड विस्पर. कुछ समझ में नहीं आता था है क्या चीज, लेकिन ना घर में कुछ अचानक, क्योंकि एक टीवी होता था, पूरा फैमिली मोहल्ला सब मिलके देखते थे, और एक बड़ी डिस्कम्फर्ट सा आ जाता था. जो मम्मी सब्जी काट रही होती थी सडनली उनका हाथ तेज चलने शुरू हो जाता था, सब इधर उधर देखने लग जाते थे, अजीब सी साइलेंस आती थी. ये तो समझ में आता था कुछ अजीब सा प्रोडक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं आइडिया था. आई वाज इन 11th or 12th दैट पॉइंट इन टाइम. So I have but couldn't understand what is it. बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के मैंने 1-1.5 साल बाद एक दिन अपनी फैमिली में पूछा कि जब वो ऐड आ रहा था कि ये है क्या. मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई प्रेम चोपड़ा या रंजीत आ गया रूम में. दे वर सो अपसेट एंड दे रिडिक्यूल्ड मी एंड सब इधर उधर निकल गए.
रुचि, आई फेल्ट वेरी इंसल्टेड दैट डे कि ना I ऐसा मैंने understand. क्यों पूछ लिया, राइट? और वो उसके बाद मुझे पूरी कॉलेज जर्नी में और नहीं पता चला, एंड आफ्टर मैरिज आई रियलाइज कि ओके दीज आर पीरियड्स, एंड आई फेल्ट लाइक अ विक्टिम कि मुझे क्यों नहीं बताया गया जब मैंने पूछा। किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, व्हाई शुड माई फ्रेंड्स टेल मी। जब वो लड़के बात करते हैं आपस में तो बड़े अजीब सी कोलोकियल लैंग्वेज होती है, तो हमारा पहला लेसन ही गलत होता है। बहुत जरूरी है कि हम सारे पेरेंट्स जब ये डिस्कशन अपनी बेटियों के साथ करें तो बेटों को भी बिठाएं। और हमने Involve कर. रिलेशन में पिछले 6 साल में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत मदर्स के साथ हमने बिठा के बेटों से बात करी है, एंड इन ऑलमोस्ट एवरी केस द बॉय टर्न्स आउट टू बी अ गुड जेंटलमैन जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो हम, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 2 पॉइंट, एक, पहले से स्टार्ट करें, दूसरा दिस इज द कॉन्वर्जेशन। और जब बैठते हैं तो माँ बाप दोनों बैठ के बताए। अगर डिस्कम्फर्ट Absolutely. फील कर रहे हैं, मान लीजिए किसी रीजन से मुझे ही कंफर्ट नहीं है कि मुझे नहीं पता इस सब्जेक्ट के बारे में, यू कैन कम टू अस, पिंकिश फाउंडेशन है, आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है पेरेंट टीचर्स मीटिंग में आज भी एक पेरेंट चले जाते हों, लेकिन जो पीरियड कॉन्वर्जेशन है या गुड टच बैड टच कॉन्वर्जेशन है, तो प्लीज एक मत जाए, दोनों ही Absolutely. जाए। इंपॉर्टेंट दैट बोथ Absolutely. यू आर देयर, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज ये सारी बातें कहीं ना कहीं घर के उस एटमॉस्फेयर को लेकर के हो रही हैं, जिसका पार्ट सिर्फ पापा और बेटी ही नहीं, माँ और बेटा भी हैं. Even for that matter, if you are in a joint family, let that not be a hush hush. Let everybody know that your daughter is on her periods and she needs more than any sideline. She needs that emotional support. Nothing else a daughter can ask for more. एंड इससे मुझे याद आएगा गौतम, मैं वो एक वाक्य डिस्कस करना चाहूंगी. एज सुन एज वी सेलिब्रेटेड Arika's first periods, Arun sir and everybody here, after 2-3 months when she was getting it on her dates, and she used to get that, थोड़ा सा उसको इमोशनली she used to be disastrous. उसको थोड़ा सा इमोशनली ब्रेक डाउन होती थी, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते थे. तो सडनली एक दिन गौतम घर आते हैं ऑफिस से शाम को 6 बजे, तो आरिका वॉज हाउलिंग ऑन समथिंग ऑन आन्हा, है ना. और आन्हा से पूछा कि क्या हुआ भी, क्यों मूड खराब है, और वो एकदम से रूम में चली गई. तो आन्हा से पूछा गया आपका मूड, दीदी को क्या हुआ, मूड क्यों खराब है, तो कहती है शी इज ऑन हर पीरियड्स पापा. So probably this kind of comfort is needed, because my 7-year-old daughter was discussing it last year that she is on her period. So probably somewhere she has that idea, this is a time, this is a time which needs more care, more attention, and needs more forgiveness. Probably this is what my younger daughter was doing. So absolutely, it is all about atmosphere, and nobody can be left alone in such kind of नहीं, conversations और when it सॉरी comes टू to. इंटरप्ट, रुचि, एंड इट वाज सो नॉर्मल जैसे कि हम लोग चार फ्रेंड्स बात कर रहे हैं आपस में, और लाइक आना ने इतने कैजुअली बोला कि पापा वो पीरियड्स में है ना, इसलिए वो शी इज डाउन ना, इसलिए, मतलब वो बहुत कैजुअली शी सेड कि इट्स जनरल टॉक, एंड आई फेल्ट सो गुड कि यार आना इज आल्सो ओपन टू ऑल दिस थिंग्स. और we feel like Anna is more mature than even Arika sometimes, because she's getting all the discussions, all the topics very, on a common platform कि यार हाँ ये भी होता है, ये भी होता है. So जी प्लीज. celebrating daughters periods, हम सभी पता है, हम इस सपोर्ट के लिए, इस कॉज के लिए आज बैठे हैं, इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं. तो मैं अब आप लोगों से स्पेसिफिकली ये जानना चाहूंगी, how do you think such kind of celebrations, celebrating periods, your daughter's first period for that matter, can develop that positive attitude around people, people around you, or how can we break that stigma, that age old beliefs that our families have had? How do you think it's going to be possible? So if I can come to Deep Bhaiya for this. Okay, sorry. Again, it was a good question, Ruchi. Celebration of periods uh, actually sends a powerful and strong message that periods are normal and natural part of a woman's life, and it is not that you have to be afraid of it or something like that. So it's a natural part, and the way Gautam and you have celebrated
This celebration actually breaks the myth or the social taboo and the misconception around it, that and also it removes the stigma, which has been built over a period of time. So this normalization actually challenges that myth and stigma, and then basically it leads to the fact that these are normal bodily functions and nothing to be ashamed or afraid of. So this will basically help this celebrations. This will up the tempo, and no one will feel afraid of it. Your daughters will open up like your daughters have done. So that's the celebration will help in all of this, I believe. Yeah, thank you for your answer. So Neeraj ji, what are your views on this? How can celebrating daughters' periods can change it all for us? मेरा ऐसा मानना है कि जब हम पीरियड्स को सेलिब्रेट करेंगे तो वो एक स्पेस देगा एक बाप भाई को बहन या बेटी से इंटरेक्ट करने में, और ये हेल्प करने में कि क्या क्या चीजें इस पीरियड के दौरान हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए. एग्जाम्पल, if there is any exercise that one can do, you can discuss that. Food, what should they eat during periods time, I think can break the taboo that we're talking about. Apart from that, ऐसा मेरा मानना है कि मेंटल इवन थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए. जैसे कि हम बात कर रहे थे, मूड स्विंग्स होते हैं. सो अगर हमें पता है और अगर हम पहले से ही अपने बच्चे को तैयार करें कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, मे बी यू कैन परस्यू सम हॉबी स्टफ ड्यूरिंग 4-5 days. बी पॉजिटिव. और अगर आपने ये कर लिया 2-4 महीने 1 साल, आपका बच्चा बाय डिफॉल्ट भी मैच्योर हो जाएगा उस सिचुएशन को हेल्प करने में, फॉलो करने में. और इसके अलावा और सारी भी चीजें जो लाइफ में होती हैं. इट्स नॉट अबाउट पीरियड. कभी आप ज्यादा काम करते हो, आप थक जाते हो, तो हाउ टू चैनलाइज योर एनर्जी व्हेन यू आर नॉट वेल. आई थिंक सेलिब्रेटिंग पीरियड्स गोइंग टू ब्रेक दैट वॉल wherein two parties can talk to each other in detail, in nice manner, without fearing कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं. No, it's all about health. So you can take this. Absolutely, Neeraj. So we are discussing periods here because it's a natural process and it's an empowering one. Yeah, and the moment number of people will realize how natural this process is, how much care this process needs, specifically in a woman's life, in a daughter's life, they will get surely more focused, more energized, and more careful about such issues happening at home, specifically with their daughters and all the women at home. So I will just look for one line answers from everybody of you, fast service. So first question I will throw, and you all have to give me answer on that. Any one practical step as a father you would like to suggest that we must initiate in order to normalize discussions about periods in our families and communities? First, I'll go to Gautam. It's like openness and like friendliness with kids. Yeah. Okay, Deep That's sir. the most important. Yeah, Deep sir. You're on mute. Sorry. Education and creating awareness with programs like what you have been doing will surely help, I think. Okay, Vasu. Taking the initiative, let this be a fatherly job totally, not a Okay, motherly great. job. Okay, great. Samrat Dada. About awareing ourselves, first of all, awareing the vicinity where we live in. That's the most important that we can do. फैमिली में तो हम लोग कर ही सकते हैं, बट आसपास को सिखाना, जो पैड्स लेने जाते हैं और काले पॉलीथीन में भर के देते हैं, उसको पहले बंद कराना चाहिए हमें. उस चीज में वो करते हैं, उसके बाद बाकी सब चीजें. Yes, absolutely. Arun sir, what do you feel about it? How can we do that? समाज बदलने निकलेंगे, पहले अपने घर से शुरू करेंगे. Absolutely. So I support Arun sir in that lead by example. Let's walk the talk and talk the walk. Both ways are important. Then only
And once this starts inside the family, I'm sure we will be able to create a number of lives outside our families. So as we are, almost finishing the time for the show, I would like to have one last question with a specific reference to Father's Day and celebrating your daughter's first periods. What is your view on celebrating your daughter's first periods? I will start with Samrat Dada. That's a very good initiative. I mean, this will always create awareness with our daughter. Also, we are teaching her over this. We are celebrating her period, so she can be the biggest volunteer that we have in future. So Absolutely. she can be one of the person who will always take the legacy forward and make this clear in the zone. Yeah. How about you, Neeraj? What do you think about it? Well, I feel open conversation मेरा मेरे बच्चे से छोटे छोटे इवेंट्स पे उसको रेफरेंस करना और उसको चीज़ों को समझाना, एंड आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी आने वाले टाइम पे. Deepuda, what is your view on celebrating your daughter's first periods? See, as Gautam already said, it has to happen since the age is small, since a very short time period. It cannot happen on the very first day or on a single day. So it will be very good. This is obviously going to send a powerful message, but you have to have a proper bonding with your daughter since the very early ages. So that. Yeah, absolutely. So, Vasu, what is your view on this? How would you like to celebrate your daughter's first period? Though she is just 1 year old, Arun sir, but he is sitting here because he is supportive for our cause. Yes, Vasu. Mute. You're on mute. Yeah, first of all, we need to respect this aspect. क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद भी, देश से बाहर जाने के बाद भी, कुछ भी करने के बाद भी मेंटल ग्रोथ मेल्स की इतनी नहीं हो पाती है कि वो इस चीज को डिग्निटी से देखें या देख पाएं, बता पाएं. तो सबसे पहले इस चीज को मतलब हमें खुद एसिमिलेट करना पड़ेगा. उसके बाद अपने बच्चे को धीरे धीरे इसके बारे में बताना पड़ेगा, और जब वो पल आए तो उसका हाथ पकड़ के उसके साथ बैठें, उसके साथ सारी बात डिस्कस करें, और आने वाले जो प्रोसेस हैं, जो चेंजेस हैं, क्योंकि इसी दौरान आगे हार्मोनल चेंजेस भी उस बच्चे की बॉडी में आएंगे, उनके बारे में भी उसको धीरे धीरे कंडीशन करें कि अभी ये हुआ है. दिस इज द स्टेप 1 ऑफ द फेज विच यू हैव टू, मतलब जो आने वाले समय में जो फेज आएगा, इस तरह के चेंजेस आएंगे. उसके बाद मेल्स आपको किस तरीके से देख सकते हैं, देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं. पुरुष प्रधान देश है हमारा अभी भी, और इसको मतलब बराबर आने में टाइम लगेगा. कहने और करने में बहुत फर्क है. मतलब हम बातें सब बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन शायद जब करने की बारी आती है तब वो हमारा रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस कभी ना कभी आता है दिमाग में. तो सबसे पहले हमें अपने आप को कंडीशन करना पड़ेगा, अपनी एनवायरनमेंट को कंडीशन करना पड़ेगा, ताकि हम आने वाले समय के लिए ऐसी जनरेशन तैयार करें जो शुरू से ही इस चीज के लिए रेडी हो, एक्सेप्टेंस हो, जिसमें ओपन हो. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और एक चीज मुझे वासु की कॉन्वर्सेशन में बहुत अच्छी लग रही है, to report to my mentor sitting here, Arun sir. He always is talking about, holding the hand of your daughter, caressing her during every discussion that you do with your daughter, because probably daughters need that touch, that feel, that lovingness from their fathers to open their heart. And believe me, Gautam is a live example here. I'm sure you all must have witnessed it. Every time you go and hug your daughter, doesn't matter what she's going through, she will open up your heart and tell you everything that she's been going through. And I strongly agree with Vasu here on one point again. ये टाइम लगेगा, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, और इसीलिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमें अपने परिवारों से ही शुरू करना है. हम बातें कर रहे हैं आज बैठ करके, लेकिन जब हम अपने घर में ये चीज़ें शुरू कर देंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे, तो शायद हमारा मोटिव जो है वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ बैठ के इस बारे में बातें करने का. सो before I finish this session today, I must
congratulate all of you for being a part of this show. Why do I say congratulate? Because this was not easy. I'm sure this was not easy for you all. It must have, taken a lot of courage for you all, being males in the families, to come up, have this discussion, support each other. And this is why the congratulation has come on your way. I must congratulate and thank you for being a part of this healthy discussion over here. Yeah, every discussion we have done today is nothing to pull anyone in the society or anybody in the generations down. It is all about how we as parents of this generations think, and how open we are, how our acceptances have, the horizon has broadened in order to receive, perceive, and understand things in a different manner. Yeah, Arun sir want to say something. Yes, sir. So, Ruchi, before you finish, something I would like to submit here. Yes, Okay. agree कि हम लोगों की एक पर्टिकुलर तरीके से कंडीशनिंग हुई है ओवर द इयर्स, और पीरियड्स की बात करना और सब कुछ करना एक स्टार्ट करने में टाइम है। वासु जी की बात बिल्कुल सही है, लगता है टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको दूसरी तरीके से सोचा जाए, जैसे जैसे हमारी बेटियां बड़ी होती हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हम बड़ा प्रोटेक्टिव रहते हैं। इवन बहुत जगह ये भी होता है कि कौन बॉयफ्रेंड है, क्या है, किससे मिल रही है। देन वी फाइंड अ गुड सूट और हम उसकी शादी तय करते हैं, एंड दैट इज सच जॉयस मूवमेंट एंड वी सेलिब्रेट इट। सब कुछ लगा देते हैं उसमें, लोन ले लेते हैं, बट वी वांट दैट ओकेजन। हो क्या रहा है, एक स्टेटस चेंज हो रहा है उस बच्ची का, और अब वो एक मैरिड वुमन होगी, आगे मदर बनेगी। अगर उसी डायरेक्शन में सोचें तो जब पीरियड्स आते हैं तो एक छोटी बच्ची एक युवती में कन्वर्ट हो रही है। बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। देखिए, कंडीशनिंग ऐसी होती है हम लोगों की कि जो हम बिहेवियर फॉलो करते हैं वो आ जाता है। किसी चीज को अगर उस समय उसे हश हश एनवायरनमेंट मिलेगा, पता चला पापा साइड हो गए, मम्मी ने चाची को बोल दिया कि इसको हल्का सा पैड दे दो, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे जिंदगी भर इस चीज को हश हश रखना है। लेकिन जब हम सेलिब्रेटिंग पीरियड्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम उस समय पेरेंट्स नॉर्मल बना दें, उसके फ्रेंड्स को बुलाएं, अपने कुछ रिलेटिव्स को बताएं, सबको फोन करें कि आज बेटी को फर्स्ट पीरियड हुआ है, लेट अस थ्रो अ पार्टी, ब्रिंग हर गिफ्ट, लेट अस मेक हर फील लाइक शी इज अ प्रिंसेस। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। उसे कभी समझ में ही नहीं आएगा ये कोई छुपाने वाली बात है। उसको तो ये लगेगा वाह कमाल है, मतलब आई हैव डन समथिंग, आई हैव अचीव्ड समथिंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। बात करनी तो है, उसमें बड़े बहुत हिचक लगेंगे, हिम्मत करके उसको सेलिब्रेट कीजिए। और गौतम जी को देता हूँ अगेन, ही हैज समथिंग टू से, प्लीज गौतम। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मेरी जो यंगर डॉटर है वो तो इसी चीज में एक्साइटेड है कि अगर मेरा सेलिब्रेट होगा, मेरा मेरे मतलब फर्स्ट पीरियड डे, शी विल बी हैविंग गिफ्ट्स, क्योंकि उसको पता है बट दीदी को गिफ्ट मिला था तो मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। उसने तो बोला कि वो है कि मेरा कब सेलिब्रेट करोगे आप। And the ट्रस्ट concept मी, behind सेम। this is somewhere we have removed this emotional trauma that she could have been through else otherwise had we not spoken about this openly. मैं एक छोटी सी स्टोरी से खत्म करना चाहूंगी और एक थॉट के साथ आप लोगों की खत्म करना चाहूंगी। हम लोगों में जो हम उत्तर भारत के लोग हैं, पहाड़ी हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ब्राह्मण फैमिलीज में आज भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, and it is done at the age of 5, 7 when the boy grows in the family. So it was happening for my 3 brothers in the family. One my cousin Tauji ka bete, and 2 were my brothers, and it was a huge celebration, Arun sir, in the family. And people were called, it was a 3-day celebration like a marriage. And I was around 17, 18-year-old. I had come from my hostel to celebrate this in Lucknow, and I saw everybody so happy, like a marriage like function was going on. And after all this happened, after 3 days, I asked my father in a very normal noise, Papa, mera यज्ञोपवीत संस्कार कब होगा? So बेटे के लिए यज्ञोपवीत संस्कार है तो आपकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, इस बात का संस्कार सेलिब्रेशन कब मनाया जाएगा? इस थॉट के साथ मैं आज आप लोगों से यहाँ पे अलविदा लेना चाहूंगी। वी विल soon surely be coming up with another prompting and very sensitive topic which needs a lot of talk on this. Yes, Arun sir. मुझे नहीं रुचि, आपके अलावा वी हैव वन मोर मदर एंड वी हैव नॉट गिवन हर एनी अपॉर्चुनिटी। आई थिंक बहुत अच्छा होगा अगर लास्ट में आपकी बातों के बाद हम उनसे फिनिश कराएं।
और उनके भी थॉट्स Absolutely. Absolutely. I was just looking at the clock, but believe me, Arun sir, she has been the greatest support in everything I do in life. And she was the first one probably when I thought about and started discussing about the celebrations I wanted to do at my home. And we are talking about you, Nupur. Okay. So we want to Thank hear you it so from much. you. You sat there for so long without talking a word, but I know this patience came from the celebration you have in mind about how this topic is becoming so much, important to be discussed and so much open to be discussed. So what are your views on this, Nupur? First of all, thank you so much, Ruchi, for inviting me on this beautiful platform where I sharing screen with all the super dads. So wish you all happy Father's Day. And thanks to Arun Sir, Pinkshi Thank you. Foundation, and all the volunteers that they thought celebrating Father's Day in such a beautiful way. और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई और तरीका होगा फादर्स डे सेलिब्रेट करने का। और सही मायनों में मुझे ऐसा लगता है ये एक फादर का अपनी बेटी को फादर्स डे पर एक रिटर्न गिफ्ट है एज अ प्रॉमिस कि वो उसके सिर्फ सक्सेस और हैप्पीनेस में ही नहीं बल्कि महीने के उन दिनों में भी उनका साथ देगा जब उन्हें सबसे ज्यादा लव और केयर की जरूरत है। Absolutely. What a powerful message, Nupur. What a powerful message. And I see my audience and my guest speakers in deep thought, specifically Deep Bhaiya and Neeraj. So I must thank you all for being here, for being those awesome dads who took the first step today in their daughter's life and with the promise that we will change it for our daughters. So thank you so much. Thank you, each one of you individually. Thank you, Arun sir, for bringing me here on this platform. Thank you, Dibya. Thank you, Neeraj. Thank you, Vasu. Thank you, Samrat Dada and Nupur. And thank you, my dear Thank you. husband. Without your support, it Thank you. wouldn't have been possible. Thank you so much. Thank you. Thank you so Thank much. you so Bye much. bye. Lovely Thank Thank you. session. you. Bye. Bye. Bye.